चुकेगी। बाबा पुकारे, बाबा खड़े हैं बाहें पसारे, आओ बच्चों कहेगी बाबा पुकारे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज तो बाबा के घर में बड़े भाई और कुमार भाई सब पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत। I extend a warm welcome to all the brothers who have come here. आज बाबा ने हम बच्चों को चैतन्य लाइट हाउस बनने के लिए कहा। Baba says in today's Murli that children, you need to become living lighthouses. नैया को बताते हैं, just like lighthouse shows the directions to all the ships. ये किनारा पथरीला है या अच्छा, So it just gives the directions to उनको और आगे आगे जाने के लिए बताता है। हम बच्चों को भी सबको बाप का परिचय देना है। So we children have to give Baba's message to everyone, and we need to show them the path. मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना। We need to show them the path to the land of peace and तो सुनते हैं the land of liberation and the land of liberation in life. Let's listen to Murli. 2024 के महावाक्य। Today's date is 21st August, बाबा कहे, and the essence of the Murli is, sweet children, you are living lighthouses. तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको You have to give बाप का परिचय देना, everyone the Father's introduction घर का and रास्ता show them बताना। the path to go back home. प्रश्न है, Today's question: आगे चलकर
कौन सा डायरेक्शन और किस विधि As you से make progress, what direction अनेक will आत्माओं many को souls get, मिलने वाला है। and in what way they receive those directions? उत्तर है Answer: आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा as you progress, कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ। many people, Baba says, as you make progress, many people will receive this direction that you go to Brahma Kumars and Kumaris. तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। They give you the knowledge which enables you become the prince of the golden age. ये इशारा उन्हों को They will receive this ब्रह्मा signal के साक्षात्कार by having a vision of Brahma Baba. अक्सर करके Generally, they have a vision of Brahma. ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही They have a vision of Brahma Baba or Sri Krishna. होता है। जैसे आदि में Just as the part of visions took place in the beginning, so it will also take place साक्षात्कार का पार्ट चला as the role of visions took place in the ऐसे beginning, ही so in the same way it will also take place अंत में at the भी end. चलने वाला है। ओम शांति। Om Shanti. रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं The spiritual father asks you children. सबसे तो नहीं पूछ सकते। He cannot ask everyone. नलिनी He बेटी से asked पूछते daughter हैं Nalini, what are you doing here? यहाँ क्या कर रही, किसकी याद में बैठी। Are you sitting? In whose remembrance are you sitting here? नलिनी दीदी ने उत्तर दिया बाप So की Nalini याद Didi में ji responded saying that, Baba, I'm in your remembrance. तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाप की याद में बैठी हो So father is asking, या और are भी you sitting in the remembrance कुछ of याद just है। the father, or are you remembering anything else? बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे Because when you remember the father, your sins will be और absolved. क्या याद करती, What else are you remembering? ये बुद्धि का काम है ना। It is the work of the intellect. हम आत्माओं को अपने घर जाना है We souls have to go back home. तो घर को So, भी of course, we need to याद remember that करना। place as well. अच्छा, और क्या करना है, What else you have to do? क्या घर में जाकर बैठ जाना है। Will you just go home and sit there? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते, They have shown Vishnu the discuss of the self-realization. उनका अर्थ भी बाबा ने समझाया है। Baba has also explained you the meaning of that. स्व अर्थात
आत्मा को दर्शन हुआ 84 Baba जन्मों says के the self, that is, the चक्र soul, gets a vision of its cycle of 84 births. तो वह चक्र भी फिर आना पड़े So the soul has to, that discus has to be turned. तुम जानते हो हम 84 का चक्कर लगाकर You children know घर that जाएंगे we have played our roles of 84 births. Now it's the time to go फिर back वहाँ home. से आएंगे Then we will come from up above सतयुग में पार्ट बजाने to the golden age to play our roles. फिर 84 का चक्कर लगाएंगे Then again we will take 84 births. विष्णु को कोई चक्र होता नहीं In fact, Vishnu doesn't have that discus विजयी है because he has कोई already attained that अलंकार victory. दिखाए हैं So he has just been decorated with this. वह तो है सतयुग का देवता He is a deity of the golden age. विष्णुपुरी कहो You can either call that place as लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो the land of Vishnu or the land of Lakshmi and Narayan or heaven. स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था There used to be the kingdom of Lakshmi and Narayan in heaven. अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं If you call that is the kingdom of Radha and Krishna, Baba says that is a mistake. राधे कृष्ण का राज्य होता नहीं Baba says there is no kingdom of Radha and Krishna because क्योंकि दोनों अलग अलग they are a राज्य prince and princess from separate kingdoms. प्रिंस प्रिंसेस थे राजाई के मालिक They become the masters of the kingdom. स्वयंवर के बाद बनेंगे They become the masters of the kingdom after their ये marriage. जो विष्णु को चक्र दिया है So they have shown Vishnu with a discus, but in fact तुम्हारा it's your cycle of 84 births. ये संगम युग के ज्ञान के अलंकार So Baba says this is a decoration of the knowledge तो यहाँ which is given जब at this बैठते confluence age. So when you sit here, you shouldn't तो just sit in सिर्फ silence. शांति में नहीं बैठना वर्षा भी याद करना You need to remember the inheritance. इसलिए ये चक्र That is why the discus has been given. बाबा कहते हैं Baba says, तुम लाइट हाउस भी you are lighthouse. बोलता चलता लाइट हाउस You are walking and talking lighthouse. वो लाइट हाउस तो एक ही स्थान पर खड़ा रहता है So that lighthouse, it just will be at one place, whereas we are walking and talking lighthouses में है because we have शांति धाम the land of peace in one eye and the land of happiness in the other eye. आँख में है सुख धाम दोनों को याद करना पड़े We have to remember both. याद से तो पाप कटने हैं Your sins are cut away by having remembrance. घर को याद करने से घर में चले जाएंगे By remembering your home, you will go home. फिर चक्र को भी याद करना Of course, you need to spin that discus also. ये सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है Only you children have the knowledge of the entire cycle. 84 लाख कहते Of course, they say that human beings take 84 lakh births, 84 whereas का Baba चक्र clarifies लगाया है the maximum number of births would be 84 only. अब ये अंतिम
जन्मा Now है, we have been around the cycle of 84 births, and this is the last birth in this land of death. नई दुनिया को कहा जाता है The new world is called अमर लोक। the land of immortality. तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है, Baba says, even if we become old, हम if we have this गर्भ knowledge, महल में जाकर प्रवेश करेंगे। we will go and enter the womb of a अभी palace. जाते हैं गर्भ The जेल palace, में। the womb is compared with a palace here in the golden age. वहाँ तो गर्भ महल होता है। So Baba says their soul never experiences any suffering at the time of वहाँ taking पाप birth, तो करते नहीं जो सजा खानी पड़े। यहाँ तो because पाप करते souls हैं never commit any sinful actions to experience the जिस punishment there. कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं The soul experiences punishment तो फिर because of पाप शुरू sinful actions, and once it takes birth and comes out, again the soul starts performing ये those है sinful actions. पापात्माओं So की Baba says this is the world of दुनिया। the sinful souls. यहाँ तो दुख ही दुख है। There is a lot of sorrow here. वहाँ दुख का नाम नहीं। There is no name or trace of sorrow there. कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? Baba is talking about which world? सतयुग में पाप नहीं करते। He says that no soul वहाँ दुख performs का any नाम sinful नहीं। action. That is why there will not be any name or trace of sorrow in that world. एक आँख में शांति धाम, So you need to have the land of दूसरी peace in आँख one eye में and the land of सुख happiness धाम in रखो। another eye. भल तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए, Although you have been doing tapasya and परंतु performing ज्ञान different तो नहीं rituals, है ना। but you don't have this knowledge, right? मंत्र का अर्थ नहीं You don't even know the meaning of सिर्फ जपते the रहे। mantras, what you used to chant, वह है भक्ति, because that is the path of devotion. उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती। You don't get any way तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते, that you can become Satopradhan through this, कोई भी नहीं जानता। because no one knows. बस सुना है। We have heard that soul on the path of कृष्ण devotion. भगवान उवाच, They just say that God Sri Krishna speaks, देह सहित देह के सर्व धर्म संबंधों को renounce the छोड़ो consciousness of the body and bodily और relations मेरी शरण में and आओ। seek my. ये गीता के अक्षर है These are the words of जो Gita. पढ़कर सुनाते हैं। They just read and relate it to everyone. ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम भी ऐसा बनो। But they don't ask you to become like them. सिर्फ गीता में परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण So in Bhagavad का Gita, नाम लिख दे। instead of mentioning God Shiva speaks, God Sri Krishna अब speaks has been श्री mentioned. कृष्ण तो So Baba clarifies here, Sri रथ ही Krishna है ना, is the charioteer. उनको रथ चाहिए क्या? So does he need a chariot? वह तो खुद देहधारी है। He is a bodily being. श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? Who has given him that जैसे name? छठी होती है, On the sixth day after baby is born, सबके नाम they have it that naming ceremony. बाप
whereas the father is just को तो called Shiva. सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो We souls come into the cycle of birth and तो death. शरीर का नाम बदलता है। That is why we get different names in different births. शिव बाबा तो जन्म मरण में Whereas Shiv Baba is नहीं beyond the आते। cycle, he doesn't come into the cycle, वो सदैव so शिव ही है, his name remains इसलिए intact, it doesn't get सदाशिव changed. कहते हैं। जब बिंदी लिखते हैं तो कहते हैं शिव। When you apply a zero, you say बिंदी Shiva. आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। A soul is an extremely subtle point. आत्मा का अगर साक्षात्कार होता Even if you are granted a vision of a soul, तो किसको भी समझ में नहीं आता। no one would be able to understand anything. देवी को देखकर खुश हो जाएं। They just look at the deity and they become very happy. अच्छा फिर क्या? माना What देवी else देवता का after this? साक्षात्कार होता If है, someone is granted a vision of a god or goddesses, खुश हो they जाए। just become फिर happy. क्या? But Baba says, प्राप्ति तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं, because you don't have any attainments, सिर्फ नौधा भक्ति की, because you perform intense devotion, दर्शन किया and तो when you उसमें perform intense ही devotion, खुश you हो have a जाए। vision and then you become very happy just because you are granted visions. बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं। There will not be any question of the उसके land of लिए तो पूरा liberation or ज्ञान land of चाहिए, liberation in life. You need complete knowledge to पवित्रता चाहिए, go there, and you दिव्य need to गुण have चाहिए। purity and you have to imbibe divine virtues. वह है सब भक्ति मार्ग। So Baba says यहाँ all ये that is a है paraphernalia of the path of ज्ञान। devotion, and this is the path of knowledge. यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा Here का visions are granted frequently फिर of Brahma श्री Baba कृष्ण or Sri Krishna. कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ They are said to go to Brahma, तो तुम कृष्णपुरी then व वैकुंठ में जाएं। you will be able to go to the land of Sri Krishna or Vishnu. लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार होता है। Some are granted visions of Lakshmi or ऐसे Narayan. नहीं कि साक्षात्कार हुआ It's not that माना सदगति हो गई। the moment visions are granted, the souls start receiving ये salvation. सिर्फ इशारा मिलता है, They just get that signal that यहाँ जाओ। you go there. आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, As you progress direction further, मिलेगी। many will get visions granted and they get the directions. तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है। The picture of Trimurti will also be printed in the newspapers. ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है। Of course, the name of Brahma Kumaris will also be printed in the ब्रह्मा का newspapers. साक्षात्कार होगा। So they would have a vision of Brahma. इनके पास By जाने going to से that one, you will receive knowledge of ये वैकुंठ का how to become a prince of paradise. प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को Just as Arjun had, as it is mentioned in Gita, विष्णु का और विनाश का Arjun had a vision of Vishnu as well as of the destruction.
Baba says, तुमको कमल फूल समान बनना है, you need to become a lotus flower. परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, But Baba तो says, ये अलंकार but विष्णु को since you दिए। don't remain constant, that is why the decoration has हम been given एक to रस Vishnu. नहीं रहते, Because our state just fluctuates every now and परिचय then. होते हैं, इसलिए That is why ये अलंकार this विष्णु को दिए। ornament has been given to Vishnu. नहीं तो देवताओं को शंख आदि की क्या दरकार है? Else, why would deities need conch shell? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। So Baba compares with this knowledge. When you speak knowledge through your lips, it is called इससे ध्वनि होती है। blowing the conch shell. कमल का राज भी Baba also explains the significance of the lotus flower. तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। You Brahmins have to become like a lotus at this time. गदा है, And the mace is for 5 विकार conquering रूपी 5 माया vices. को That is, it is meant for conquering Maya. तुम ब्राह्मणों को इस समय बाबा उपाय बताते हैं। Baba shows you the method. माँ में कम याद करो, Constantly remember me alone. Your sins will be absolved. तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर Follow Srimad and remember the purifier father. बाप को याद करो। दूसरा तो कोई पति No one apart from the father is the purifier. सिवाय एक बाप के। बाबा ही कहते हैं, Baba says, मुझे you बुलाते all call out ही to me to इसलिए come हैं because कि हम सब I liberate all of you शरीर से from your bodies and take you to that pure world. पावन दुनिया में ले चले। तो बाबा ही So the Father आकर comes and makes all souls pure. सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि Because अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा impure स्वर्ग souls में cannot जा go नहीं back home सकती। or to the heaven. वहाँ तो पवित्र ही जाएंगे, Only तो बाबा हमें पवित्र Only pure souls can go back home. That is why Baba comes at this time to purify बाबा us. कहते हैं, Baba says, पवित्र बनना है तो मुझे याद करना। you need to remember the Father if you have to याद से become ही तुम्हारे pure. कट Because all the sins are burnt away with the pilgrimage of remembrance. ये मैं गारंटी करता। Baba gives us that guarantee. बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, People call out, O purifier, please come. हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। Please make us pure and take us to that pure world. भक्ति में भी गाते हैं ना, It's also sung on the path of devotion that इस पाप की दुनिया में से दूर take us away from this वहाँ world ले of sin चलो जहाँ to such a place सुख where चैन पावे। there is happiness and comfort. तो कैसे जाएंगे? How do we go to such a place? कितनी सीधी बात बताते हैं। So Baba says this is quite straightforward.
बाप की सहज नॉलेज That happens only through Baba's easy knowledge, और सहज बात है। and it's quite simple also. कहते हैं कामकाज करते It's हुए also said that while doing all the work, मुझे याद कर। you need to remember the Father alone. भल नौकरी आदि करो, You are allowed to do your भोजन jobs. बनाओ, You may also cook your meals, तो भी याद में रहकर but you need to ensure that you will be in the remembrance of Baba while cooking food, शुद्ध बने। so that the food becomes pure. इसलिए गाया जाता है That is why it is remembered. ब्रह्मा Even the भोजन deities के had a लिए desire for Brahma Bhojan. देवताओं को भी दिल होती। ये बच्चियां भी Even these भोग daughters, लेकर they go जाती with हैं, Bhog to the subtle region, and a meeting takes तो place there. वहाँ महफिल होते। ब्राह्मणों और देवताओं का A gathering of Brahmins and वहाँ deities take मेला place लगता there. है। सूक्ष्म वतन में बाबा दिखाते Baba just shows all those scenes in the subtle ब्राह्मणों region. और देवताओं का मेला लगता है। A meeting takes place between Brahmins and भोजन स्वीकार करने आते हैं। deities. They come to accept their food. जब भोजन पान करते हैं Before the Brahmin priest तो take their मंत्र meals, जपते हैं। they chant that mantra. ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। Brahma Bhojan is praised a lot. सन्यासी तो ब्रह्म को याद करते The saints and sannyasis, they remember the element ये Brahm. है हद के सन्यासी। They are limited sannyasis. कहते हैं They हमने say एक that बार they have renounced माल their मिलकर homes and आज families, सब छोड़ा। and they have renounced their homes, फिर अभी families, तो and wealth. शहरों में घुस गए। जंगलों Now को they have छोड़ pushed दिया their way in और cities. They शहरों have में आकर left the forest. आश्रम बनाकर बैठे। They started creating their own ashrams, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। whereas yours is an unlimited renunciation. तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते। You forget the entire old world with your तुमको intellects. फिर जाना है नई दुनिया। You need to go to that pure world. घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में ये है While living अब in हमको जाना on the है path of household, it must be in your intellects that वाया you need to go to that land of happiness through land of peace. शांति धाम को भी याद करना। You need to remember the land of peace. बाप को शांति धाम को We have to remember the land of peace and सुख the धाम Father and the land of याद happiness. करते हैं। ये हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। This is the last birth of many births. 84 जन्म पूरे हुए। The cycle of 84 births is coming to an end. सूर्यवंशी से चंद्रवंशी From the Sun dynasty, we become the Moon dynasty, then we become merchants and Shudras. वे लोग फिर कहते हैं Those people say that आत्मा सो each soul is the supreme soul. आत्मा को कोई लेप शेप नहीं लगता The soul is beyond, it क्योंकि is immune आत्मा to the ही effect of actions परमात्मा। because each soul is a supreme soul. बाबा कहते हैं Whereas Baba says, ये भी उन्हों का उल्टा
Their understanding is completely wrong. बाप बैठ हम सो का अर्थ Baba समझा, sits and explains the meaning of हम this आत्मा phrase, which is in परमात्मा के Hindi. It's Hum संतान So. हूँ, We souls, we are the पहले children of the one पहले Supreme हम Father. स्वर्गवासी We were the देवता residents of थे, heaven in the beginning. We were deities in the beginning. फिर चंद्रवंशी Then we belonged to the क्षत्रिय बने, Moon dynasty. Then we 2500 became वर्ष Shudras. पूरा हुआ, Baba फिर says after वैश्य 2500 years passed, शूद्रवंशी we became merchants and we विकार, became Shudras. We became completely vicious. अब हम ब्राह्मण चोटी We Brahmins are top knot. यहाँ बैठे हैं, We are sitting here जैसे कि 84 की बाजुली खेलते, We are sitting here as though we are doing a somersault of 84 births. आगे तीर्थों पर Previously, जाते when थे, people went to the जाते थे, pilgrimages, तो भी ऐसे बाजुली करते, they would make निशान marks along the डालते way जाते हैं। as they just अभी तुम्हारा move, तो सच्चा whereas yours is a true pilgrimage. तीर्थ है, शांति धाम और सुख धाम, That is of the land of peace and the land of हमारे happiness. तीर्थ है Baba says this pilgrimage is the true शांति one, धाम और सुख धाम। and this is to that land of peace and the land of happiness. तुम हो रूहानी पंडित, You are the सबको spiritual राय guides. देते हो, बाप You को give याद करो, directions to तो everyone to शांति remember the धाम Father चले जाएं। so that you will go to that land of peace. साधु संत आदि All the सब saints and sannyasis, शांति धाम जाने के लिए मेहनत करते हैं, they make a lot of effort to go to that land of peace, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। whereas no one can go. जाएंगे फिर अंत में सारा हॉल लोट सब इकट्ठे जाएंगे। So Baba says we will आपने go समझाया है, together. सतयुग में तो बहुत थोड़े होते Baba हैं, has explained there are very few in the golden age. फिर होते रहते। Then the growth takes place gradually. बाप ने समझाया है, Baba has explained तुम हो स्वदर्शन you are चक्रधारी, the spinner of the discus of self-realization. नहीं है। Deities are not the spinners. इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। So the battle takes place between you and Maya at this लड़ाई time. में भी जिसको जोरदार समझते हैं, फिर उनके पास जाकर So शरण लेते हैं। in that battle, whoever is stronger, they just go and seek refuge with that किसकी शरण लेते हैं? team. Whose refuge you take at this time? It is of Shiv Baba's. स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं, Both husband and wife, they say, I seek refuge with you. पढ़ते हैं तेरी, मेरा तो Mine एक is one Shiv Baba, none other. दूसरा न कोई। सब आत्माओं का The बाप Father एक of all the souls is one, और उस एक के ही तुम बच्चे। and you are the children of the one Father. साधु संत तो The saints and sannyasis, they are not one, अनेक भगवान हो जाते हैं। since they consider every soul to be a supreme बाबा soul. जब आते हैं तो बाबा को आश्चर्य लगता है When Baba कि यहाँ incarnates, अनेक Baba भगवान just gets होते wondered हैं, with the understanding what saints and sannyasis have. जो घर से रूठे वो भगवान, Baba says, whoever sulks फिर with his बड़े home, बड़े they become शाहूकार God. करोड़पति जाकर उन्हों के Many wealthy शिष्य millionaires
They go and become their followers और महफिल मनाते हैं and they celebrate गंदे खान पान with impure food. तमो प्रधान मनुष्य है ना They are thamopradhan human beings. हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही Hindus don't know about their own religion. बाप समझाते हैं तुम तो The father वास्तव में explains, आदि सनातन in fact, you belong to the original eternal deity religion परंतु पतित बन गए हो because you इसलिए have become impure. अपने को देवता कहना You नहीं cannot call yourselves deities. वह धर्म ही प्राय That religion has now disappeared. मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आय वाले हैं People are so vicious and एक they मिनिस्टर बाबा have a के पास criminal आया eye. था One of the ministers had बोला come to Baba हमारी तो and he criminal said, आय जाती Baba, my अब vision बाप becomes criminal. समझाते हैं Now the father explains, बच्चे सिविल children, बन you should become those जब with a तक civil eye. क्रिमिनल आय जाती है Baba says, for as long as you have a criminal eye, you are impure. संस्कारों में जरूर विषय विकारों की So Baba गंदगी says है, there is a dirt of these तब vices तो in the विकारी sanskars. ख्यालात That is why उठते you always get vicious thoughts. अपने को भाई भाई समझो तो We souls are criminal brothers. दृष्टि उड़ जाएगी So Baba says each one of you has to consider the other one as soul, एक and बाप we are से brothers, वर्षा and we are taking the inheritance from the one father at this time. आत्मा का ये प्रकुटी तख्त है The throne of this soul is the forehead. This is called immortal throne. तख्त है अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है The immortal soul is sitting on this throne. पुतला है This body is a सारा puppet बल of clay. आत्मा में ही The भरा whole role is recorded in the soul. बाबा कहते हैं मैं Baba 5,000 says, I वर्ष come के बाद after आता हूँ, 5,000 years तुम बच्चों को वर्षा देंगे to give inheritance to you children. तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस You children know that वर्षा देने you have come here to receive that inheritance of peace, happiness, and prosperity. You get a lot of wealth and there is a lot of abundance in the golden age देवता बन for 21 births. बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं No one, just no soul, यहाँ shuts the तो body बैठे without अचानक becoming वर old. पड़ते But there is a हैं, lot of uncertainty and untimely death गर्भ takes में place in this अंदर iron भी age. मर पड़ते हैं। Some die while they are वहाँ in the तो womb. दुख का नाम नहीं But there is no name or trace of sorrow in the उनको golden age. कहा जाता है That is why it is सुखधाम, called the land of happiness राज्य। and the kingdom of Ram. ये है दुख धाम Whereas this is रावण the राज्य। land of sorrow, the सती kingdom of में Ravan. होता है। Ravan doesn't exist in the golden age. तो ये 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा So definitely the knowledge of these 84 births will be in your intellects. हम There नए will be a lot of विश्व के happiness when आधार you know सती that के मालिक बनने वाले we are going to become the masters of the गीता golden में age. भगवान हुआ It's been mentioned in हे Gita. बच्चे देह God सहित speaks, देह renounce के the सब body and the bodily relations. संबंधों को छोड़ो अपने को आत्मा समझ मामे You need to consider yourself as a soul and remember the Father. तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वो है Your true friend अल्लाह is Shiv अवन, Baba. दिन का नाटक हातम ताई का नाटक सब All the plays of समय के Allah, Avaldin, and Hatam भी Thai मनुष्य are of this कितना time. माथा मारते People हैं now just beat their heads so much in order to reduce the population. बेहद का बाप कितना कम कर देते The unlimited Father reduces this population to a greater extent. कम कर देते
सारे विश्व में सतयुग में 9 In the लाख golden age, आबादी there is a जगत population of just 9 lakh in the whole world. बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते There aren't this many millions of people there. सब मुक्ति धाम All will go back शांति to that धाम land of में liberation and land of चले peace. जाएं। यही तो करामात की This is a बात miracle, है। right? एक देवी देवता धर्म का He lays the फाउंडेशन foundation of लगाकर one deity religion बाकी and सब destroys विनाश all कर other religions. ये 84 You का have to make this चक्र cycle of 84 sit in your अच्छी intellects very हुई well. बुद्धि में बिठाना है। ये है स्वदर्शन चक्र। This is the discuss of self realization. कोई गला आदि It's not नहीं about काटना। a discuss which is used for cutting anyone's throat. शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के In लिए the scriptures, हिंसक बातें लगा दी। they have said the violent things about Sri Krishna, that he killed everyone with the discuss of the self realization. ये भी ग्लानि हुई ना, So Baba says this is also a deformation. कितना हिंसक बता दिया। Just see how much they have made him तुम डबल violent, अहिंसक बनते, whereas you become काम double कटारी non-violent. चलाना ये भी To use the sword of lust is also violence. आत्मा के पवित्र Baba स्वरूप says का घात करते हैं। you are just killing your original form of purity. देवताओं So Baba, को that तो is why says पवित्र it's कहा violence. जाता है। Deities are said to be pure. बल से जबकि विश्व के मालिक When you बन become the सकते masters हो, of the world तो with the योग power बल of से yoga, बच्चा क्यों why नहीं पैदा कर सकते? can't children not be born साक्षात्कार through the power of होगा, yoga? They would have a vision that they are going to have a child. होना। Baba understands बाबा that तो समझते हैं, he will shed this old body and अभी ये पुराना then have a शरीर golden spoon in the छोड़ेंगे mouth. और golden spoon in mouth। तुम भी समझते हो, You also understand that when you take birth in the land of immortality, you will have a golden spoon in your mouth. golden spoon in mouth होगा। गरीब Poor प्रजा subjects are also चाहिए needed. ना, परंतु दुख There is no की question कोई of any type of बात sorrow there. होती ही नहीं। प्रजा के The पास subjects don't have as much wealth थोड़ी or ही prosperity, इतना धन माल but आदि they do होता have है। happiness and a long lifespan. बाकी हाँ, सुख होगा, आयु बड़ी, राजा रानी शाहूकार The kings and प्रजा queens, wealthy subjects, सब चाहिए ना। all are needed there. अच्छा Acha. मीठे मीठे To the sweetest, beloved, long lost and now found children, love, remembrance, and good morning from the mother, father, and Bap Dada. प्यार और गुड मॉर्निंग। The spiritual father also says namaste to the spiritual children. हम रूहानी बच्चों की We spiritual रूहानी children माता also offer पिता love, remembrance, and say good बाप morning to the दादा mother, को father, and Bap या Dada. प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली से The essence for धारणा Murli, the first one. मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ Together with staying in remembrance of the Father, you need to remember the cycle of 84 births in order to stay in happiness. 84 के चक्र को भी याद करना है। Spin the discus of self realization and make God खुदा को your true friend. अपना सच्चा खुदा दोस्त बनाना।
दूसरी पॉइंट है Second one, डबल in order to become doubly non-violent, change your criminal eye and make it civil. Practice. We souls are brothers. भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। आज का प्यारे बाप दादा Blessing. का वरदान है, सर्वशक्तिमान बाप May you keep the Almighty Authority Father combined with you and become an embodiment of success. साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। May you keep the Almighty Authority Father with you in combined form and become an embodiment of success. Those children who are combined with the Almighty Authority Father, they have a right to all the powers. उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है और जहाँ Where there are all powers, it's impossible for there not to be success. न हो ये असंभव है। यदि If you don't remain constantly combined with the Father, then success also will be then less. कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा When you साथ constantly निभाने keep your imperishable companion, who constantly fulfills the responsibility of companionship combined with you, success then becomes your birthright. सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है क्योंकि Because सफलता success is always in front of and behind those who are Master Almighty आगे authorities. पीछे घूमती स्लोगन Slogan: सच्चे वैष्णव वो हैं True Vaishnavas are those who don't even touch the dirt of vice. को छूते भी नहीं हैं। True Vaishnavas are those who don't even touch the dirt of vice. आज का अव्यक्त इशारा है And today's Avyakt signal, 21वीं पॉइंट 21st, सदा स्मृति रहे कि हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे always let this be in your awareness that we are the children of the Almighty Father सर्वशक्ति and we are Master Almighty authorities. सर्वशक्तियाँ हमें हमारे शस्त्र हैं These powers are our decoration, or they are our ornaments or weapons. सदा समर्थ व विजयी रहेगी A powerful soul तो कभी किसी who has all these powers will never get defeated, or it will not, the soul will never fluctuate. दूसरा न कोई It will the soul will have this attitude that only Shiv Baba is mine, none other. This awareness makes you Mahavir and you will always have the victory. विजय का अविनाशी तिलक सदा Let your forehead have ओम शांति। the tilak of victory which always shines. Om Shanti. जो भी भट्टी के लिए कुमार और अदर कुमार All the Kumars and other brothers who have come for Bhatti, आज शाम का संगठित योग शांतिवन निवासी बीके कॉलोनी सेवा the evening meditation for the brothers and sisters of Shantivan and BK Colony, the meditation will be in Dadiji's meeting hall. सेवा देना चाहते हैं वह योग के Those who would like to आएंगे 50 give their service in Diamond Hall, है जो भी कुमार अदर कुमार भाई we need some 50 sevadaris. तो सेवा में भी सहयोगी बनेंगे और प्यार से अपनी भट्टी भी करेंगे You are requested to extend your cooperation in the service as well as और अदर कुमार भाई
You need to ensure that you will be benefited from the bhatti. 5 बजे यहाँ डायमंड हॉल में All the मिलेंगे। brothers are requested to be in the Diamond Hall at 5 p.m. होगा and there will be this 5 से 6 formal बजे के बीच inauguration. में गेट पर ही आपको तिलक You दिया will be जाएगा given और tilak at संगठित the योग चलेगा। entrance of the 6 से door. 7 बजे आदरणीय पुष्पा दीदी जी क्लास कराएंगी। 5 to क्लास 6 का will be विषय yoga, and है 6 to 7 there will be a class by शुद्धता, संपल respected बनने का आधार संपूर्ण पवित्रता। Shushma Didi 7 ji, बजे मधुरवाणी ग्रुप गीत प्रस्तुत and the करेगा। class topic आदरणीय is गीता दीदी जी आपको purity भक्ति का forms the लक्ष्य basis of सुनाएंगे। becoming a sample आदरणीय piece. मुनि दीदी जी और Post that साक्षात्कार मूर्त आदरणीय दादी रतन मुनि जी there आएंगे, will be a आपको song by आशीर्वचन Madhurvani देंगे। group to welcome you आप सभी all, का परिचय and कराया जाएगा, कौन कहाँ से all आए the हैं। senior sisters आपको and टोली respected मिलेगी Dadi और ji आज ही also would सबको praise this सौगात evening, मिलेगी। and you तो will be given सौगात godly सभी gift भाइयों को आज ही लेनी this है evening. शाम को। इसलिए अगर आप माउंट आबू जाते भी हैं तो समय से Even if you छुट्टी have में any पहुंच plan जाएंगे। to go to Mount Abu, जिन भाई you must बहनों be को कल back at सत्सवार 5 को p.m. भोग लगवाना All है, those who वह would like संदेशी to बहन offer रुक्मणी bhog to बहन जी Baba, से you are न्यू requested डायमंड to हाउस में meet रूम नंबर respected 115 Rukmini Didi जो ji फर्स्ट in फ्लोर पर Diamond है, Hall. वहाँ Her पर room number प्रातः is 10 से 12 और शाम को 114 6 से and 8 बजे के बीच 115. आप संपर्क कर सकते हैं। आप कल बोलेंगे भोग लगवाना तो संभव नहीं होगा। जिस किसी को भोग लगवाना है You वे आज must ही meet संपर्क her today करेंगे। itself. भट्टी में आए हुए भाइयों का नाश्ता और भोजन की व्यवस्था बड़े डाइनिंग हॉल में फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर रहेगी। स्पार्क विंग की तरफ से प्रभु रतन प्रतियोगिता There is का a आयोजन contest किया गया Prabhu है। Ratan which is ये प्रतियोगिता launched by the 15 Spark अगस्त Wing, से 15 and this अक्टूबर contest तक will चलेगी। start from इसमें 16 प्रकार it की has started from कैटेगरी हैं। 15th अधिक August and it will जानकारी के end लिए आप प्रभु on रतन 15th डॉट कॉम October. से There are 16 प्राप्त categories. कर सकते हैं You रिटर्न can कर। take part और in any डायमंड of the हॉल के बाहर categories. नोटिस बोर्ड पर भी पोस्टर लगा है You जिससे can just इस प्रतियोगिता के बारे में visit the जानकारी Spark मिल office for सकती है। further information. स्पार्क की 400 से भी अधिक किताबें हैं। There are स्पार्क more than विंग 400 books of ऑफिस Spark टेलीफोन Wing, एक्सचेंज के the ऊपर office which सेकंड is फ्लोर पर है। above जब भी telephone पुस्तक लेना exchange. चाहें तो If वहाँ anyone आप is interested, you can just स्पार्क visit ऑफिस the में office. 9 से 1 शाम The को 4 office से 6 timings is और 9 to फिर 1 रात को and 4 8:30 to से 6 9:30 p.m. जाकर के पुस्तक ले and सकते हैं। night अभी हम 2 मिनट 8:30 to बाबा की याद 9:30 में p.m. बैठेंगे Let's और जो remember भी Baba for 2 50 कुमार minutes. अगर कुमार भाई सेवा में सहयोग देना चाहते हैं वे योग के पश्चात यहीं आकर के सामने रुकेंगे। वल्लभ भाई उनसे मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि आपको बताया कि शाम को आपकी भट्टी का शुभारंभ है, तो अभी बहनें नहीं हैं, तो इसलिए दोनों तरफ से गेट नंबर 1, 2, 3 से इधर से भी भाई आकर के बैठेंगे और भाइयों की तरफ से भी भाई आके बैठेंगे। इसका ध्यान रखेंगे। 2 मिनट योग करेंगे। Let's remember Baba for 2 minutes.
Let's watch Dadi's video now. Now, Baba, the duty of Brahma Kumar and Brahma Kumari. What is the duty of Brahma Kumar and Kumaris? What's our daily routine, our instant vision rule of the daily routine? Everyone should note down this once in your diary. If we have to be like the Father and be obedient to the Father, check yourself and follow the rules. Automatically, I will do such actions. They will do more after seeing us. So therefore, we should always remember the rules of our routine. What's my instant? What's my vision and life? To ensure this, we should note down our daily routine. In order to make it very firm, we need to note down and revise it. Thank you. Om Shanti.